Hi dosto, in this series of dynamic programming, today we are going to start class 3 first video. This is a template question. I have already explained two different types of classes in the previous videos. So also the questions related to those classes I have uploaded on my channel, Manvendra Singh Chhajerh, whose link you can find in the description. अच्छा, so as of now अपन क्या करने वाले हैं, आज एक टेम्पलेट क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है, तो देखते हैं उसको. So class 3 template question is longest common subsequence. Okay, so let's read the problem description. ठीक है, given two sequences, find the length of longest subsequence present in both of them. aha, एकदम sweet, छोटा सा. So a subsequence, अच्छा एक्चुअली मैं तुम्हें चीज बताता हूं, मुझे खुद को बहुत कंफ्यूजन होता था, यू नो, बिटवीन सब सीक्वेंस एंड अनदर टर्म दैट वी आर गोइंग टू सी, दैट विल बी सबस्ट्रिंग. सो वो कंफ्यूजन अपन यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है. सो अ सब सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस, ऑलवेज रिमेंबर. ओके, उप्स, या, सो अ सब सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग दोस्तों. कि एंड अनदर थिंग इज दैट नॉट नेसेसरली कंटीजियस. सो उसका मतलब ये है कि बेसिकली सपोज अरे एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ज्यादा इजी है, ठीक है. सो सपोज यू हैव अ स्ट्रिंग 1 एज लेट्स से चाइना, ठीक है, एंड स्ट्रिंग 2 एज COCRAHIN. So that will be CHN and NA, ठीक है. So ये तुम्हें दी हुई है. Now चीज क्या है कि you have to basically see that what are the subsequence that is same in both these things. So the subsequence is a sequence. So you have to go in a same order, either from left to right or from right to left, ठीक है. So left to right जाके देखते हैं एक बार. So A, do we have a A? Yes, we have a A. So I'll just write A. Okay. The next thing, N. Do we have a N? Yes, we have a N. Okay. Next thing, do we have a I? No, it's N. I. Yes, we do have I. So we'll write I. Now, do we have H? Yes, we do have H. Cool. We'll move. Do we have A? No, we have A here. But then again, we have to start from here. So this can be matched with this. So in another answer, we'll be matching this with this. So do we have R? No, we don't have R. Okay, we'll move ahead. Do we have C? Yes, we do have C. Now, we can start here in the final answer, we can write CHIN China, or we can start another solution C. So I guess you got an idea, ठीक है, कि क्या होती है subsequence, ठीक है. So यही करना है अपने को. We have to find the longest subsequence given two string, ठीक है. सिंपल स्वीट. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी एज यूजुअल डू, वी राइट आवर सिलेक्शन डायग्राम और अपना रिकर्शन डायग्राम, ठीक है. सो मैं बना लेता हूं. क्वेश्चन में बोला है कि वी हैव टू स्ट्रिंग, सो लेट्स से स्ट्रिंग 1 एंड अनदर स्ट्रिंग 2. अच्छा, इसकी लेंथ कर देते हैं n एंड इसकी लेंथ कर देते हैं m, ठीक है. तो we have to find the longest common subsequence. So let's say we have a I, okay, I as a pointer or any index variable which is right now pointing here, and for string 2 we have a j, ठीक है. अच्छा, तो अब तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मुझे लगा स्पेस कम हो जाएगा. अच्छा हाँ, चलो शुरू करते हैं. सो आवर सिलेक्शन डायग्राम और आवर रिकर्शन डायग्राम, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स, लाइक इन दो कैरेक्टर्स की क्या पॉसिबिलिटीज है. दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो मैच करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है. तो दो पॉसिबिलिटी बना देते हैं. ग्रीन से तो लिखते हैं मैच, ठीक है, एंड ऑरेंज से लिखते हैं नॉट मैच, ठीक है. अच्छा, सो अब अगर मैच हो जाएगा तो क्या होगा.
अगर मैच हो गया तो व्हाट विल डू, विल मूव वन स्टेप टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. सो अपना जे जो यहां पॉइंट कर रहा था विल नाउ पॉइंट टू द नेक्स्ट कैरेक्टर. Similarly, the I which was pointing here will now point to next character. So in case if it is match, then we'll shift our I to one step left hand side and similarly our J to one step left hand side. ठीक है. अच्छा, what if it's not matched? अगर मैच नहीं हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी है? अगर मैच नहीं हुआ दोस्तों तो फिर से दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है. बताओ हम कैसे. अच्छा, तो या तो क्या कर सकते हो तुम आई को एक इस तरफ शिफ्ट कर दो और जे को वही रहने दो. सो आइदर यू विल शिफ्ट योर आई टू लेफ्ट हैंड साइड एंड यू विल मेक योर जे टू स्टे एट दिस पॉइंट ओनली. सो वन पॉसिबिलिटी इज your I will move, suppose this is your length n, so I will move one step to the left hand side and you will let, and what you will do for your J, let it point to the original position that it was pointing to, or not. I'll just remove this. Okay, now what is the other possibility? Well, other possibility is you will make your I to stay there and you will tell your J to move one point to the left. ठीक है. तो या तो इसके एक सबसेट में होगा कि इस वाले एंड इसमें, या फिर इस पूरे में एंड इसमें एक होगा, ठीक है. सो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो अपना आंसर होगा. सो व्हाट वी आर डूइंग, वेल लेट्स टेक सम न्यू पेन. ओके, पर्पल. So basically we will find max, okay, so we'll find max of these two. ठीक है. इन दोनों कंडीशन से जो भी अपने को मैक्स मिलेगा वो अपना आंसर होगा. सिंपल, अपना डायग्राम बन गया सिलेक्शन. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, रिकरेंसिलेशन. चलो रिकरेंसिलेशन देखते हैं. सो एज यू नो व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच आर चेंजिंग, आई और जे, ठीक है, तो वही कर देते हैं. सो एफ ऑफ आई कॉमा जे. ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? सो द पॉसिबिलिटीज आर, व्हाट इफ दे आर मैच्ड? इफ दे आर मैच्ड देन विल मूव I minus 1 and j minus 1 will move one step forward for both I and j when if your string 1 of I is equal string 2 of j. ठीक है. Okay, what is the other thing? So what if they are not equal? So if they are not equal, then in that case what we will do? अच्छा, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकाल रहे हैं. अगर मैच हो गया है तो एक चीज करना मत भूलना, +1 लगा देना, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो दो कैरेक्टर तो हो चुके अपने मैच, तो अपन एक स्टेप आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. तो एक कैरेक्टर अपना मैच हो गया, तो यहां पे है, ये तो होगा ही, +1 भी हो जाएगा, ठीक है. तो यहां पे अपन ने जो चाइना का निकाला, तो इसमें आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है. चलो तो आगे बढ़ जाते हैं. आगे बढ़ेंगे तो अपने को क्या दो पॉसिबल ऑप्शन थे कि इफ दे आर नॉट इक्वल, दे हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर्स, देन व्हाट वी विल डू, विल मेक आवर आई टू मूव one step left hand side and let the j stay there, or another possibility is we may call I to stay there and we'll let j to move one step to left hand side. Now we have to find max of this, so I'll just write these into one bracket and let's rub this and I will write max. ठीक है, अरे विजिबल होगा, छोटा सा देख लेना. ठीक है, तो ये अपने को करना है कब? जब ये दोनों इक्वल नहीं है. इफ स्ट्रिंग ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 1 ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2 ऑफ j.
ठीक है. अच्छा, एक फाइनल कंडीशन क्या रह गई कि इफ योर n equal or equals to 0, let's say, or your m equals to 0. Now in these two conditions what will happen? 0. अगर एक स्ट्रिंग है ही नहीं, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग के अंदर से दूसरी स्ट्रिंग का नल स्ट्रिंग का तुम निकालोगे LCS, या वी से इट इज लाइक LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, तो आंसर आएगा 0. ठीक है, चलो बहुत सिंपल है. आप इसको कोड करना है, एटलीस्ट एक बार खुद ट्राई करो कोड करने का. नहीं होता है तो ऑब्वियसली मैं तो कर ही रहा हूं. ठीक है, सो विल कोड आर रिकर्शन फंक्शन. Okay friends, so our recursive function basic structure remains the same. We'll first write a base condition. Okay, before that let me tell you about the parameters. So string A is a first string and int I is the index corresponding to a string A, and similarly string B is a second string and int J is the index corresponding to string B. Okay, so we need to write our base condition. So we want to basically halt a recursive function. So that will happen when any of the index I or J, becomes out of bound. So if they become out of bound, let's say if I is less than 0 or if J is less than 0, in that case we cannot find more common subsequence. So we'll return 0. Okay, so this will be a base condition. Now what we need to do? Well, we need to write our recurrence relation or our selection diagram or recursion diagram. ठीक है, काफी सारी terminology हो गई है. So let's do it. So what was the first condition? If your a of I is equal b of j. Now in that case we know that one character has been matched, so we'll write 1 plus we'll check for the remaining characters. So we'll reduce the value of I by 1 and we'll reduce the value of j by 1. That's it. Okay, so what if they're not equal? Well, in case if they are not equal, then we know that either will reduce the value of A or will reduce the value of B, and we'll find out which gives us the maximum value. Okay, so I'll call the function max, and the very first condition. So let's say if we reduce the value of string A by one value and let the value of string B be the same. So we need to find the maximum of this, or we need to reduce the value of B by 1 and we'll let the value of string A to be same. Okay, so that's it for a recursive function. चलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं. रिकर्शन ट्री की बात करूं, सो ये चलो इस बार तुमको एक होमवर्क ही देता हूं मैं. वैसे तो काफी टाइम से होमवर्क ही दे रहा हूं, बट आई विल गिव यू वन एग्जांपल. Take a sequence like AA, BB, AA, BB and AB, AB, BC. ठीक है, तो ये string 1 लेना और ये string 2 लेना. So I hope you guys know how to draw a recursion tree. Draw the recursion tree. Now because these alphabets, repeat हो रहे हैं वो. सो लेट्स से अगर तुम्हें बहुत जल्दी आंसर चाहिए, लेफ्ट से राइट शुरू कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे सी को हटा देता हूँ, बी भी लिख देता हूँ, सिंगल बी लिख दो, चलो बस काफी है. नाउ व्हाट यू विल सी, दिस बी कैन मैच टू दिस बी, और व्हाट यू कैन डू, एंड यू विल मूव वन स्टेप अहेड, और यू कैन मेक दिस बी टू मैच टू दिस बी. ठीक है, तो तुम क्या देखोगे कि देयर आर बेसिकली सम सब ट्रीज विच वर बीइंग called more than one time. So we don't want to perform the calculation again and again. And उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन जब एक बार calculate करेंगे, we are going to store that particular result. And that technique of storing the result is called as memoization. So let's cache our recursion function. Okay, so in memoization, what we need to do? Well, we need to find first a dynamic parameters, which is like int I and int j. So this denotes that we need a two-dimensional array. So let's declare a two-dimensional array in TP 1000 and 1000 should work, and initialize it with value -1. You can use the function memset as usual if you're using C++. Okay, cool. So in order to
memoize your recursive code, you need to follow two steps. The very first one is to store your recurrence relation value. So wherever you're finding your values from recurrence relation, store them. So I'll write dp of ij is equal to this, and here also we are calculating it. So before returning, I will store them. Ij equals to max of this. Okay, we are good here. Now the next thing that we want to do is we don't want to recalculate the same subtree that we have calculated in our previous calculation. So what we do, we check. Now if dp of ij is not equal to -1, then that denotes that we have already calculated that subtree. So why not just simply return the answer that we have already calculated? So dp of ij, that's all. Cool. So you have reduced your calculation like exponentially. ठीक है, बोले तो बहुत तुमने टाइम एफिशिएंट बना दिया है यहाँ पे कोड को. बहुत सिंपल सी, बस कुछ 2-3 लाइन और ये डाल के तुम्हारा काम हो गया है. ठीक है, चलो मेमोराइजेशन हो गया अपना. चलो कैश हो गया. नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. अच्छा, तो वो जो चीज देखते थे ना कि तुम्हारे दोस्त बस टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिख दिया कुछ भी कि IL और यहाँ पे लिख दिया तुमने YOU. ठीक है. अच्छा, तो कुछ स्ट्रिंग लिखते थे, देखते थे क्या कॉमन है. यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कॉमन आएगा 0. ठीक है. तो ये तो टेबल बनाते थे, कहां से आई है टेबल, कौन लेके आया, उसका मिलता जाओ अपने को डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ के अंदर. सो लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज द सॉल्यूशन अ टेबल. लेकिन एक चीज बता देता हूं, अपन टेबल इसलिए बना रहे हैं बिकॉज in recursion what happen is when we are calling recursion function, then calling of the function takes some space in the stack memory. ठीक है, तो एक error आ जाता है which is called as stack overflow. stack overflow ठीक है. हाँ, तो error आ जाता है stack overflow. तो उसी error को हटाने के लिए अपन recursion की जगह iterative solution करते हैं. So let's code it iteratively. But before coding iteratively, let's visualize कि क्यों वैसे कोड करना होता है जैसे अपन करते हैं. ठीक है. ओके, अच्छा ये देख लो. एक्चुअली क्या, मुझे बहुत कंप्लेन मिली क्या सर आपकी हैंडराइटिंग, लाइक बोलते दोस्त आपकी हैंडराइटिंग कैसी है और वगैरह. तो मैंने क्या करा, इस बार किसी और से बनवा लिया. ठीक है. आई होप दिस हैंडराइटिंग इज गुड फॉर यू नाउ एंड थैंक यू दोस्त ये बनाने के लिए. ओके, चलो लेट्स डू इट. So what I have done basically, just like what we have, coordinate geometry में x, y axis. So suppose this is your x axis and this is your y axis. Just like that, in our fourth quadrant, I have made this point. So I have written a string here or a text here and another a pattern here. Okay. So what will happen? Basically, we are on the initially what was the values of I and j. They were pointing to the length of the string. So that was basically n and your m values. So the characters are s and s. Okay. So right now you are at this point. ये कलर मेरे को काफी अच्छा लगा है. ठीक है, तो अपन ये यूज करते हैं. अच्छा, so what happen if these two matches? So if the character matches, then what you will do? You will move one step. You will make your I to move one step to the left hand side and your right j to also move one step left hand side. So basically you're decreasing the values of I and j. Now if you decrease the values of I and j, then you will move diagonally towards this point. Okay? So what's going on is here we'll do +1. So यहाँ पे जो है अपन कर रहे हैं +1 और सीधे सीधे बोलूँ तो जो weight है ना इस edge का वो है 1. अच्छा, अब यहां पे क्या आ गया अपने पास, इस पॉइंट की बात करूं मैं और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहां पे आ जाते हैं. तो यहां पे s है और s y. सो आर दीज 2 पॉइंट इक्वल? नो, s and y are not equal. Now if s and y are not equal, then we see both the possibility. Either we will subtract the value of I or either we'll subtract the value of j. ठीक है. तो what will happen? We'll move to left hand side or to upward direction. So the weight of edges here will be 0. Here it will be 1 and here it will be 0. So from this point to this it will be 1, and where we have s and y.
So I'll write where we have s and y. In that case, it's pointing to another 2 points, and there the width of the edges will be 0. ठीक है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं. ठीक है, so one match, not a match. In that case, weight is 0. ठीक है, match जैसे ही मैच हो गया, कैसे मैच हुआ? y and y. ठीक है, so y इक्वल हो गया. जैसे ही मैच हुआ, अपन डायगनली ऊपर चल जाते हैं. So there the value was 1, here also the value is 1. So 1 0 1, so 1 plus 0 1, and 0 plus 1 1 plus 0 plus 1, which is basically 2. So till this point your calculation is like your longest common subsequence is 2, and that is correct. If you just have YSS and just YS, then the longest common subsequence is 2. अच्छा, basically क्या है, तुम इस चीज को नोटिस करो कि in order to calculate this, you need to calculate first this. In order to calculate this, you need to first calculate these 2 points. Now, in order to calculate this, you first need to calculate this. Similarly, in order to calculate this, you need to calculate this. So there is a 3 match till this point. WW. ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और यहां देख लेते हैं. अच्छा, यहां पे 1 था, यहां 0 था, यहां 0 था, यहां 1 1 1 0 0 1 1. ठीक है, सो ये जो है तुम्हारी फर्स्ट रो, ये बेसिकली तुम्हारा 0 इंडेक्स है. ठीक है, कि व्हाट इफ योर स्ट्रिंग 1 इज नल और व्हाट इफ योर स्ट्रिंग 2 इज नल. और ऐसे बोलो तो क्या तुम्हारा पैटर्न अगर नल हो और तुम्हारा टेक्स्ट अगर नल हो तो क्या होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है अगर ये कैलकुलेट करना है तो उससे पहले ये वाले सारे पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाने चाहिए. ठीक है, मैं बाकी पूरा बड़ा नहीं करने वाले अपन. एक्चुअली मैंने तो नहीं करा, मेरे दोस्त ने करा, बट इसका मतलब आप समझ लोगे. तो सीधा अपन लास्ट वाली देख लेते हैं. ठीक है, सो S, this S was matched to this S, then here this Y was matched to this Y, then this A was matched to this A. ठीक है, then W, this W was matched to this W. Similarly, LA, so this A was matched to this L, and 0 L, okay, no need. And here AI again not match, so 0. Now at this point this A was matched to this A. ठीक है, तो अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया. अच्छा नहीं, ये A नहीं होगा. So we were matched here with L A. ठीक है, तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है. So I'll make it with red. ये L जो होगा इस L के साथ मैच होगा इस तरफ. ठीक है, ये दोनों मैच हो गए. एंड देन फाइनली A, ऑलवेज A L W A Y S. ठीक है, सो बेसिकली इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आंसर फॉर दिस पॉइंट यू नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट दीज पॉइंट्स. ठीक है, इसलिए क्या होता है कि अपन टेबल को इस फैशन में फिल करेंगे ऑल द वे अप टू हियर. ठीक है, सो अब तुम्हें एक अच्छा विजुअलाइजेशन मिल गया हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो वी आर गोइंग टू इटरेट ओवर one pattern and one text, or one string 1 and another to string 2. ठीक है, so let's code it iteratively. Okay friends, now we are going to convert our recursive code into an iterative solution. So let's look at our recursive code. So initially we are writing a base condition when I is less than 0 or j is less than 0, then we are returning 0. Okay, same thing we are going to do here. अच्छा, उससे पहले तो मैं बता देता हूँ मैंने क्या वेरिएबल का यूज किया है. So your int nm denotes the length of a string A and string B. Then I'm taking input for the the length, the string A and the string B, and dp is basically the array which is going to store the result. Okay, and here I'm using memset function. So memset function you can find in the library cstring, and I'm using algorithm because we will be using the max function. Okay, so let's start it. As you know from the directed acyclic graph, what we have to do, we have to iterate it from int I equal to 0
to all the way up to n I plus plus, and similarly we need to iterate over our second string, so j equal to 0 to less than equal to m j plus plus. Okay, so now look at your recursive code. The very first thing was a base condition. So a base condition will become our initializing condition, sort of. So I mean, if your I equal 0 or j equal 0. Okay, so here we have written I less than 0 or j less than 0. Well, why I less than 0? Because what I was saying was that we need to go out of bound, and we were using 0 based indexing there. Okay, now here we are using 1 based indexing, as we are going till nth term and mth term, as you can see here. So here our I equal to 0 and j equal to 0 denotes that we have already exhausted all the characters of one string. Okay, so in case if you have exhausted all the characters of any string, so we are going to simply put the value as 0. Okay, so let's see the next thing. Well, the next thing is that we are checking if the a of I equal b of j. So we'll do the same. We'll simply check if the characters are equal. So if a of I equal b of j. Acha, here we are not using, here we are using 1 based indexing. So we need to reduce the value of I by 1 and j by 1. Now, if that is the case, then dp of ij is equal to 1 plus, we'll see. So it's I minus 1 and j minus 1, as you can see here. So we'll simply write the same thing. Instead of LCS, we are storing the result in dp. So we'll write I minus 1 and j minus 1. Now, since either this or this, else if I'll write. Now, even if this condition is false, then what we are going to do, then we are going to find the max among the two conditions. Okay, so what are those? Well, max among LCS of a I minus 1 j and LCS of I j minus 1. Okay, so instead of LCS, I'll write dp because we are storing the result. So I j minus 1 or dp I minus 1 or j. Okay, so this will give our that's it, I guess. Okay, that's it. So our answer will be stored in the bottommost right corner, as we know. So let's print our answer. See out answer equals to, so it will be on dp for the nth term, and the mth character will get our answer. बस सो बस हो गया दोस्तों सिंपल. तो इसलिए बोलता हूं कि रिकर्शन कोड पहले लिखो एंड उसको कन्वर्ट करो इटरेटिव सॉल्यूशन में. इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी सिंपल. सो ये हो गया अपना इटरेटिव सॉल्यूशन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का. अच्छा चलो, iteratively भी कोड हो गया. So I hope now the things are very clear to you. So if you want to watch the similar videos to this particular template question, I mean, I'll say in class 3 there are like almost 15 to 16 questions which are similar to this pattern. ठीक है, so we are going to see all those questions in my channel. तो मेरे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन, मतलब जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और कमेंट कर सकते हो तुम. तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स हो वहां पे, तो मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा तुम्हारे कमेंट्स का. अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.